Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 19th of April. The session will be quite interesting students, so stay tuned with us till the end. Students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning on regular basis. In this video students, we will be talking about GI tag that recently some products got the GI tag from UP. Then we will be talking about Maharashtra's Chief Minister Devendra Fadnavis has inaugurated Amravati Airport. Then we will be talking about CEA. They have launched the stellar model for resource adequacy planning. Next thing we will be talking about the world's first global carbon tax that has been introduced in the shipping industry. And we will be talking about Dr. B.R. Ambedkar Day. Apart from this, there are many more news also students in this video. So stay tuned with us till the end. If you are new to our channel students, do subscribe to us and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start with national affairs students. Mission Amrit Sarovar, reviving India's water heritage through community-led conservation. Right? So Mission Amrit Sarovar, this is a flagship initiative under the Azadi Ka Amrit Mahotsav that was announced by Prime Minister Narendra Modi on 24th of April in 2022. This was during the celebration of the National Panchayati Raj Day that was held at 24th of April. Take a note of this. Also, this Amrit Sarovar, it follows whole of government approach. This follows whole of government approach. This includes multiple ministries, right, multiple organizations for the implementation of this mission. The main objective of this mission is to basically construct and rejuvenate at least 75 sarovars. Sarovars are your ponds in every district of the country. I repeat, the main objective of this Amrit Sarovar is to rejuvenate the ponds in every district of the country. Right? This will promote water conservation and will also revive the India's water heritage. Correct? So this is your Amrit Sarovar. Correct? Take a note of this. As of March 2025, almost 68,000 water sarovars or these sarovars has been completed. Correct? So take a note of it. Moving on. One more thing, remember, this mission is supported by whom? This mission is supported by Bhaskaracharya National Institute for Space Application and Geoinformatics, BISEC-N, and National Informatics Center has provided the centralized digital platform, this amritsarovar.gov.in, which tracks the real-time progress at the granular level, that means at the lowest level. Moving on, next is our Union Minister of Jal Shakti, C.R. Patil, has recently reviewed the key projects of WII. What is this WII? It is your Wildlife Institute of India. And these projects, key projects of Wildlife Institute of India has been renewed under NMCG. What is this NMCG? NMCG is your National Mission for Clean Ganga. See, in this last topic also we just saw, we are talking about the water or these sarovars or these ponds for the water conservation. Similarly, we all know that recently that Ganga cleaning is one of the major priority. Even in Yamuna, recently in Delhi, the Yamuna cleaning was priority, and it was also stated that in Yamuna, cruise tourism will be established once it is cleaned. Right? So we are focusing on cleaning the river. We are focusing on enhancing the river health. We are focusing on community led conservation efforts where we can clean the water resources around us.
Correct. So similarly here recently CR Patil he reviewed various key projects of Wildlife Institute of India that was under the National Mission for Clean Ganga. During this you can see CR Patil, Union Minister of Jal Shakti, reviewed various key projects under this Wildlife Institute of India. Correct. With this you will be seeing that he has also launched various key products also that has been developed under this initiative, where we will be focusing on how we can clean these rivers, how we can remove the pollution from them, or various initiatives that can stop the pollution going into these rivers. Say for example industries that are set up near these rivers, these are the basic pollution, or these are the basic bodies that are generally creating pollution, and all the sewerage, all the waste of these industries go into the river. So how can we stop that? All those decisions will be taken here. Correct. If we talk about Wildlife Institute of India, where is the headquarter? It is in Dehradun, Uttarakhand. Next, India signs headquarter agreement with IBCA to become permanent host of IBCA Secretariat. What is IBCA? IBCA is your International Big Cat Alliance. This is basically to conserve the 7 big cats that includes your panther, jaguars, tigers, cheetahs, lions and so on. Right? So India has signed a headquarter agreement with IBCA to become a permanent host of IBCA's Secretariat. That means we will be permanently hosting all the meetings related to the conservation of these big cats in India only. Correct? So India will become a host country for IBCA. Take a note of this, important students. Here also remember, under this Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved 150 crore rupees for IBCA for a period of next 5 years. Right? Here the funds will be utilized for creating a corpus that will be building a proper infrastructure for conservation of these big cats. Right? Then this IBCA, it was launched by Prime Minister Narendra Modi only in 2023 during commemorating 50 years of Project Tiger. Project Tiger was launched in 1973. Next is Banarsi, Shehnai and other 20 traditional products from Uttar Pradesh recently got the GI tag, and UP is the number 1 in GI tagging in India now. I repeat, recently 21 products from UP recently got the GI tag, including the Banarsi Shehnai. Correct? Then Banarsi Tabla, Banarsi Barwan Mirch. Right? These are some products that got the GI tag. Right? And with this, UP has surpassed Tamil Nadu to become the Indian state that has the highest number of GI products. So UP now holds 77 GI tags, whereas Tamil Nadu stands at second position now with 69 products with GI tags. Correct? And in UP only, Varanasi alone accounts for almost 32 products that got the GI tag. Moving on, students. Next, Maharashtra's Chief Minister Devendra Fadnavis has inaugurated Amravati Airport and has announced the Southeast Asia's largest pilot training institute. I repeat, who is the Chief Minister of Maharashtra? Devendra Fadnavis. Right? He has recently inaugurated this Amravati Airport that will be in Vidarbha, Madhya Pradesh. Right? And this airport is being, as of now, operated by Alliance Air. Alliance Air. Right? Take a note of this. Apart from this, he has also launched, or he has flagged off a flight that was from Amravati to Mumbai under Regional Connectivity Scheme UDAN. Apart from this, he has also recently launched the Southeast Asia's largest pilot training institute, where pilots will be trained. Correct? And these training will take place featuring 34 training aircraft that will train almost 180 pilots each year. If we talk about Maharashtra, who is the Chief Minister? Devendra Fadnavis. Who is the governor? CP Radhakrishnan. Right? Sanjay Gandhi National Park is there, and Chandoli National Park is also located there. Next is CEA, that is your Central Electricity Authority. They have launched Stellar model for resource adequacy planning. Stellar is your state-of-the-art, totally indigenously developed resource adequacy model. This is a software tool that has been designed to optimize the India's power generation, transmission and storage planning. Right? This was developed by CEA, that is your Central Electricity Authority, in partnership with Hong Kong, China-based TLG Group. Right? And with Manila, Philippines-based Asian Development
bank. This software will be distributed free of cost to all the state electricity distribution companies, right? And this will help to ensure that there is no power cuts. It will find the cheapest ways to produce and manage electricity. Also, it will choose the best storage options for renewable energy and will aim that India gets electricity 24/7 without any power cuts. Next is international affairs students. India and 62 other countries agreed to world's first global carbon tax in the shipping industry. See, shipping industry is one of the biggest industries that is calling carbon dioxide, or that is causing pollution, because it generally runs on the diesels, right? So huge amount of diesel is required to run them. So this shipping industry, right, because import is and export, the trade takes place during using the shipping industry, right? So it causes huge amount of pollution. So recently India and 62 other countries, they came together and they decided that we will be establishing the global carbon tax by bringing the commercial shipping under the greenhouse gas emission in this sector, that which organization or which ship or which company is releasing more pollution, on that a carbon tax will be imposed, right? In order to exit this carbon tax or to avoid this carbon tax, you need to shift to renewable sources of energy, you need to shift to green sources of fuel, right? So a total of 63 countries came together and has agreed to sign this world's first global carbon tax in the shipping industry. Correct? And under this new framework, the carbon tax will come into effect from 2028 onwards. Next is, here you can see, since shipping sector is not covered under the 2015 Paris Agreement, this new legally binding framework on imposing global carbon tax on shipping to tackle carbon emissions will help in realizing the overall net zero target. And this new carbon tax is estimated to generate 30 to 40 billion in revenues by 2030, which means generating around $10 billion annually. The revenue collected from this tax will be used exclusively to decarbonize the shipping industry. Next is, New York City proclaims 14th of April as Dr. B.R. Ambedkar Day. Take a note of this. New York City has declared 14th of April as Dr. B.R. Ambedkar Day on the occasion of Dr. Bhim Rao Ambedkar's 134th birth anniversary. This was made by New York City's Mayor Eric Adams, acknowledging Dr. Ambedkar's contribution towards justice, equality, and human rights. Next is SBI Bank and HDFC Bank. They have ranked among the world's top 100 banks in S&P Global list. Let me show you the list itself first. On the top is your Industrial and Commercial Bank of China. On second is your Agriculture Bank of China. On third is Construction Bank Corporation of China. On fourth is the Bank of China Limited. See, on the, if we are looking at the top 5 banks by asset, we are seeing on the top 4 the Chinese banks are there. Then on 5th is your JP Morgan Chase of USA. On 43rd is SBI, and on 73rd is your HDFC Bank. This data was released by S&P Global Incorporation, who is the president and CEO here, Martin Chuang, headquartered in New York, USA, established in 1917. Correct? Next is RBI and FIU-IND. They have signed an MOU to strengthen the AML CFT framework and has cancelled the license of Color Merchants Cooperative Banks and has approved the revolts entry. Multiple things. Let's go one by one. First is RBI, Reserve Bank of India, and FIUIND, that is your Financial Intelligence Unit of India under the Department of Revenue in Ministry of Finance. They have signed a memorandum of understanding that will enhance the coordination, that will strengthen the AML CFT framework. What is this AML CFT framework? This will prevent the money laundering. This will prevent the money laundering, right? So RBI and Financial Intelligence Unit signed this MOU to strengthen so that, or enhance cooperation in the sector of money laundering, so that money laundering is reduced. Second thing we are talking about is that RBI has cancelled the license of Color Merchant Cooperative Bank. This is due to the inadequacy capital, right, poor earning prospects, and non-compliance with certain sections of the RBI. This Color Merchants Cooperative Bank, this is located in Ahmedabad, Gujarat. Next thing, RBI has imposed a penalty. Let me show you. RCI cancelled the license of Color Merchants Cooperative Bank Limited. Then RBI imposed a penalty of 61.4 lakh rupees on Kotak Mahindra Bank Limited, 38.6 on IDFC First Bank, and 29.6 on PNB Bank. Then UK-based Revolt, a global financial application, they have received the full authorization from RBI to operate as a PPI issuer and UPI transactions in India, and to enable UPI transactions in India. What is PPI? Prepaid Payment Instrument. Right? So remember these things.
Next is SBI card has partnered with Tata Digital to launch Tata New SBI card. So what has been launched? A Tata New SBI card has been launched, and it is SBI card that has partnered with Tata Digital Private Limited to launch this new co-branded credit card. This card is available in two variants, that is Tata New Infinity SBI card and Tata New Plus SBI card. Correct? And both the variants are offered on RuPay as well as Visa networks. Next, UIICL, that is your United India Insurance Company Limited, that is a public sector undertaking under the Ministry of Finance. They have partnered with SIDBI, that is Lucknow UP based company to distribute the general insurance product for the MSMEs. Right? So providing insurance to MSME, this partnership has been done. Take a note of this. This partnership will include insurance in various sectors, right? This will enhance the insurance penetration among the MSME that is crucial for India's economic growth. Next, SBI, they have reintroduced Amrit Vrisht FD scheme with revised rates. I repeat, Mumbai, Maharashtra based SBI, they have launched or they have reintroduced the Amrit Vrishti. This is a tenure of a 444 days FD scheme. Here, if we see the interest rate, right, this scheme has been reintroduced with a 20 basis point reduction in the interest rate for senior citizen, lowered from 7.75 to 7.55%. For general public, it is 7.25% earlier. Now it is 7.05%, right? And see, a total of 20 basis point, that is 2% reduction has been seen. You can see here, earlier it was 7.55% for senior citizens, and now it is 7.55%. Next is awards and recognition. We are talking about Time, right? Time magazine, it is in New York, USA based. This is a 102-year-old global media brand, and they have recently released the 22nd edition of the Time 100 Most Influential People 2025 list. This is the latest edition of the list that has released the global figures from a wide range of fields such as politics, entertainment, science, business, and so on that have crucial impact over the last 1 year. In this list, there is no Indian that has been named and that has been featured on this list. Correct? Take a note of this. This list is divided into 6 different categories, that is leaders, icons, artists, innovators, pioneers, titans, and many more. Correct? Take a note of this. Here you can see there are multiple individuals that includes your Jake Williams, right? American singer Snoop Dogg, Ed Sheeran, Demis, or the CEO of UK based Google DeepMind. Then other companies that include, or the other innovators such as Richard Thompson, who first coined the term microplastics. Then another artist such as your Scarlett Johansson, American actress, singer and producer Kristen Annie Bell, right? Apart from this, multiple women are also on their list, that is Blake Lively, Serena Williams, Richard Jones, many another, right? Take a note of it. Then one more thing, remember, in this list, 22-year-old Olympic swimmer Leon Marchand of France is the youngest person on this list in the icons category. So this question is important. Who is the youngest individual to be featured in this list in the Time magazine's Time 100 Most Influential People list? So Leon Marchand of France, the youngest person on this list to featured in this category. Right? Next is World Economic Forum Young Global Leaders was released recently, and 7 Indians were honored here, including Union Minister Ram Mohan Naidu and OYO's honor Ritesh Agarwal. So World Economic Forum, right? They have released the list of the young global leaders, right? And this list has recognized 116 leaders globally that are under the age of 40 from 50 different countries. And in this, there are 7 Indians that has been honored here. Ram Mohan Naidu, right, Union Minister, Union Minister of Civil Aviation is there. Ritesh Agarwal, the CEO of Oyo Hotels is there, right? Take a note of this. If we talk about this was founded in 2004 by World Economic Forum, and the initiative is basically to nurture the responsible leaders to shape more sustainable and inclusive future. Next is ACC has approved the appointment of Mangi Lal Jatt as the new Director General of ICAR. ICAR is your Indian Council of Agriculture Research.
correct. He has been appointed as the ex officio secretary of the Department of Agriculture, Research and Education under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare also. Important thing to remember, he is appointed as the new Director General of ICAR and he will be in this position for the next 3 years. Correct. He will be succeeding whom? He will be succeeding Dr. Himanshu Pathak. Next, here you can see, as per ACC, he will hold this position for 3 years. He will succeed Dr. Himanshu Pathak. Next is acquisitions and mergers. CCI has approved Patanjali Ayurveda and entities acquisition of MGIL for 4,500 crore rupees. MGIL is your Magma General Insurance Company, right? So, CCI approved a 0.55% stake in Mumbai, Maharashtra based Magma General Insurance Company. By whom? By Patanjali Ayurveda Limited, correct? And 5 other related entities. They will be acquiring 98.055% stake here. Take a note of this. Next students is science and technology. India and Slovakia have signed a defense memorandum of understanding for indigenous combat vehicle development. I repeat, India and Slovakia, they signed this MOU to enhance the defense capabilities of India. This agreement was signed during the President of India Draupadi Murmu's visit to Slovakia. Correct. This will enhance the partnership. This will enhance the relation, research and development between these two countries, and also this will facilitate technology transfer between the countries so that high altitude environments or basically various terrains and high altitude environments can be covered using this combat vehicle development. Next is sports students. Australia's Will Pucovski has announced retirement from all the forms of cricket. As you can see him in the picture, he is an Australian player who has announced retirement recently. Next is important day, students. International Day for Monuments and Sites observed on 18th of April. This day is observed to raise awareness about the importance of preserving the culture and historical heritage. There is a theme here: heritage under threat from disasters and conflict, preparedness and learning from 60 years of ICOMOS actions. Take a note of this. And this theme for IDMS is annually proposed by ICOMOS only. This is ICOMOS is your International Council on Monuments and Sites. This day was first observed in 1983. Next is Justice Arun Pillai has been appointed as the Chief Justice of Jammu and Kashmir and Ladakh High Court. Directly remember this, students, that who has been appointed as the Chief Justice of Jammu and Kashmir and Ladakh High Court, right? So Justice Arun Pillai, right? And he will be the 38th Chief Justice of Jammu and Kashmir and Ladakh High Court. He will be succeeding Justice Tashi Rabstan. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part that will be beneficial for your learning. Next, in April, ACC appointed Poonam Gupta as the Deputy Governor of RBI for the tenure of how many years? Right? So she has been appointed as the Deputy Governor, one of the 4 Deputy Governors for the next 3 years. Next, Sarhul Festival celebrated on Tuesday on 1st of April to welcome the spring and mark the new year for Adivasi communities is recognized as a public holiday in which Indian state? So this Sarhul Festival is generally observed in Jharkhand, and this 1st of April is observed as a public holiday in Jharkhand state. Next, the Ministry of New and Renewable Energy announced the record-breaking addition of how much amount of gigawatt of renewable energy capacity in FY25? So it was 25 gigawatts. Next is SEBI. They extended the deadline for implementing the retail algorithmic trading regulations from 1st of April to which date? And this is for retail investors. So this date has been extended from 1st of April to what? It has been extended to 1st of August 2025. Take a note of this, important students. Next, SBI and Citibank, they have announced a $295 million social loan facility to provide financial support to Dash in India. This is to provide financial support to the farmers in India. Next, who has been appointed as the new president of India Energy Storage Alliance on 1st of April, replacing Dr. Rahul Valavalkar. Demalya Sen has been appointed as the new president of India Energy Storage Alliance on 1st of April, replacing Dr. Rahul Valavalkar. Next, in 2025, India's Project Tiger, launched by the Government of India to protect the country's tiger population, has successfully completed how many years? 52. This Project Tiger
was launched in 1973. Next, pick out the incorrect pair from GI tagged products with their respective states as granted by DPIIT. If we look at the following, here we have to find the one right incorrect one. So among the following, all are right. Telangana Shikara is wrong here. Right? This GI tag, that is this product for Telangana, it is not Shikara, it is Chapat chili. Chapat chili. Next, in April, Ministry of Defence approved the use of Adilabad airfield for civil aircraft operation. The airfield is located in which state? The airfield is located in the state of Telangana. Take a note of it. Next, under whose presidency was the 11th BRICS Environment Ministers meeting held from 3rd to 4th of April with the Indian delegation led by Amandeep Garg, the additional secretary of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So under whose presidency? It was under the presidency of Brazil, right? This 11th BRICS summit, or as of now, the presidency of BRICS is with Brazil. Earlier it was with Russia and it was held in Kazan. Next, RBI granted the NBFC license to Dash in April 2025. So RBI granted the NBFC license to Securus Finance Private Limited. Next, in April, who was appointed as the new chairman of the Asian Cricket Council during the ACC's annual general meeting? So who was granted? Syed Mohsin Raza Naqvi was granted or was appointed as the new chairman of Asian Cricket Council. Next is which company in India recently signed $253.6 million agreement with Hanwha Aerospace Company Limited of South Korea to export components of K9 Vajra T tank to the Indian Army. It is L&T, Larsen and Toubro Limited. Next is who was or who has assumed the charge as the chairperson of the Spices Board, which operates under the Ministry of Commerce and Industry. So who has been appointed here? Sangeeta Vishwanathan has recently been appointed as the chairperson of Spices Board. Next, which regional rural bank became the first among the 43 regional rural banks in India to implement the e-bank guarantee service in partnership with National E-Governance Service Limited in April? So which regional rural bank? It is your Karnataka Vikas Gramin Bank. Take a note of these, students. All these questions are very important, so do pay attention to them. Moving on. Next, in April, Stand Up India scheme completed 9 years of successful implementation. Pick out the incorrect statement among the following. If we look at the options, all these three options are rightly mentioned. Is it so? No. Among the following, we have to find the incorrect statement. Only B and C are right. A is wrong. A is saying that the nodal agency for the scheme is National Small Industries Corporation. Is it so? No. The nodal industry or the nodal agency for this scheme, that is Stand Up India scheme, is Ministry of Finance, right? And SIDBI. Moving on. Next, in April, GI registry under DPIIT has granted GI tag to 7 or more products from West Bengal. Right? Among the following, identify the odd one out from GI products based on their product category. If we look at the options here, we have to find the odd one out, right? All are right, but Karampur's white bond is for textile. This is wrongly mentioned here. Correct? Take a note of it. Right? Here we find the odd one out, right? Based on their categories. All are right, but Karampur's white bond related to textile is the odd one out here. Correct? Because this is not a textile, it is your agriculture, or we can say this is a traditional sweet. This comes under not textile but traditional sweets category. Next, which private sector bank in India along with IFSC unit of IDFC First Bank and Stock Holding Security IFSC Limited was among the first entities to be designated as a corporate agent in the GIFT IFSC in April 2025? It is your HDFC Bank, right? Which private sector bank? It is your HDFC Bank. Next, in April, Indian Army and DRDO, they successfully carried out 4 flight tests of the Army version of the medium-range surface-to-air missile system from the coast of Dash. It was from the coast of Odisha, right? This medium-range surface-to-air missile, right? This was tested by DRDO and it was tested where? Of the coast of Odisha.
Next, on 5th of April, India commemorated dash edition of the National Maritime Day to recognize the vital contributions of its maritime industry to international trade and economic growth. So, India commemorated the 62nd edition of the National Maritime Day. Take a note of it. Next, who authored the book titled Trees of Bhuj, which documented 127 species of the trees found in Bhuj, Kutch of Gujarat, launched on 26th of March. So, who authored the book? This was authored by Pankaj Joshi. So let's start with our homework section, students. First question, tell me recently which state hosted the men's hockey hero Asia Cup? Second question, recently which sport was added to the LA Olympics recently? Third question, World Autism Awareness Day, when do we observe this, and give me the theme also of this day? Fourth question, tell me recently Tiger Trump. I asked this question yesterday also, but multiple students were not able to answer, right? Tiger Trump, this is an exercise held between which countries? And the important question is that from India, who took part in this exercise? Which regiment or which Indian Naval Force or which aircraft, depending upon the forces that took part, right? Tell me that also. And which edition of this exercise was there? So this is a repeated question. Fifth question, fifth is your tell me recently, when do we observe National Maritime Day, right? Tell me the day, the theme, and which edition of this day was observed, right? Then sixth question, who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of SBI Card? So these are your homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 19 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं। ये वीडियो ज़रूर देखा करो, ये आपके लर्निंग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप नए जुड़े हमारे साथ तो सब्सक्राइब जरूर करना स्टूडेंट्स, एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव, नेबर्स सभी के साथ, एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीआई टैगिंग के ऊपर कि यूपी के 21 प्रोडक्ट्स को अभी जीआई टैग मिला, एंड ये हाईएस्ट या फिर वो स्टेट बन गया जिसमें सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। देन महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा अमरावती एयरपोर्ट लॉन्च किया गया, एंड एशिया का लार्जेस्ट पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लॉन्च किया गया। देन हम बात करेंगे सीईए ने लॉन्च किया स्टेलर मॉडल फॉर रिसोर्स एडिक्वेसी प्लानिंग। नेक्स्ट थिंग, हम बात करेंगे वर्ल्ड के पहले कार्बन टैक्स, ग्लोबल कार्बन टैक्स, जो कि शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर इम्पोज किया जाएगा। फिर हम बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर डे के लिए, राइट? ये एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट कह सकते हैं हम इंडिया के लिए भी, राइट? इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसी के अलावा बहुत सारी न्यूज़ हैं स्टूडेंट्स आज की वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। मिशन अमृत सरोवर, राइट? ये अभी लॉन्च किया गया। ये है रिवाइविंग इंडियाज वाटर हेरिटेज थ्रू कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन। देखो, सरोवर क्या होता है? पॉन्ड्स। तो इंडिया के पॉन्ड्स को रिवाइव करने की यहाँ पे बात की, रेजुविनेट करने की बात की, पॉन्ड्स को बनाने की बात की गई, राइट? इससे होगा क्या? वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम किया जाएगा, राइट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉलो किए जाएंगे, एंड जहाँ पर पानी की कमी होती है तो इससे पानी की कमी हमें नहीं देखने को मिलेगी। इससे हमारा जो हेरिटेज है वो भी मेंटेन रहेगा, हम उसको कंजर्व कर सकेंगे, करेक्ट? एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि 75 पॉन्ड्स को हम हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ द कंट्री यहाँ पे रिवाइव कर सकें, करेक्ट? यहाँ पे होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच फॉलो की जाएगी, मतलब सारी मिनिस्ट्रीज, सारे डिपार्टमेंट, सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर कोलैबोरेटिवली यहाँ पे इसको काम करेंगी इस मिशन के ऊपर।
इस मिशन को सपोर्ट किया जा रहा है बाइसेक एनजी के द्वारा, जो कि है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एंड एनआईसी यहाँ पे इनको अपना सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म ये amritsarovar.gov.in प्रोवाइड कर रहा है ताकि रियल टाइम प्रोग्रेस यहाँ पे हम कर सकें। एज ऑफ मार्च 2025 देखें तो 68,000 सरोवर्स का यहाँ पे कंप्लीशन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति सी आर पाटिल, इन्होंने रिवाइव किए की प्रोजेक्ट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अंडर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। देखो अभी हमने लास्ट टॉपिक में भी यही पढ़ा कि हम क्या करेंगे, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान देंगे। हम क्या करेंगे कि हम पानी को कैसे बचाएं, पानी का कैसे सस्टेनेबल यूज कर सकें, पानी को कैसे कंजर्व कर सकें, उसके ऊपर हमने बात की। सिमिलरली यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है कि हम कैसे गंगा को क्लीन कर सकें, कैसे रेजुमिनेट कर सकें। अगर आपको याद हो तो यमुना की क्लीनिंग के ऊपर भी बात की गई थी जब दिल्ली में नई सरकार आई थी बीजेपी की, तो इन्होंने यमुना के ऊपर जोरों शोरों से काम किया सफाई का। इन्होंने बोला कि हम क्रूज टूरिज्म भी यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। तो इससे होगा क्या, हमारी जो एक इकोनॉमी है वो भी बेटर होगी, क्लीनिनेस के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। एंड इन रिवर्स में मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन क्या हो जाता है कि इंडस्ट्रीज जो साथ में, जो फैक्ट्री साथ में, इनका जो वेस्ट है वो यहाँ पर हमें इन रिवर्स में देखने को मिलता है जो अनट्रीटेड होता है बहुत जगह से। तो इसीलिए कई प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, कई इनिशिएटिव्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं और यहाँ पे इनको मॉनिटर किया जाएगा कि कैसे हम यहाँ पे क्लीनलीनेस के ऊपर काम कर सकते हैं, कैसे हम अपनी मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रिवर हेल्थ को और बेटर कर सकते हैं, लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स ला सकते हैं ताकि इन वाटर के कंजर्वेशन को ऊपर हम ध्यान दे सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। इंडिया ने अभी हेडक्वार्टर एग्रीमेंट साइन किया आईबीसीए के साथ ताकि हम परमानेंट होस्ट मेंबर बन जाएं ऑफ आईबीसीए सेक्रेटरीट। आईबीसीए क्या है, आईबीसीए क्या है, आईबीसीए है आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, राइट। ये आईबीसीए का बेसिकली एम क्या होता है कि 7 बिग कैट्स जैसे आपके लेपर्ड्स, टाइगर्स, लायंस, जैगवार्स, राइट, इनको हम कंजर्व कर सकें। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, आईबीसीए का इनिशिएटिव 2023 में 9 अप्रैल 2023 को, जिसका एम था कि कैसे हम अपने इन टाइगर्स को, इन बिग कैट्स को प्रिजर्व कर सकें। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। इसी के अंडर यूनियन कैबिनेट ने 150 करोड़ रुपए भी अलोकेट किए हैं फॉर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स ताकि इनकी कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान दिया जा सके। एंड इस अग्रीमेंट से होगा क्या, अब इंडिया एक परमानेंट मेंबर बन जाएगा, परमानेंट होस्ट मेंबर, मतलब अब हम ही आईबीसीए की जो भी मीटिंग्स वगैरह होंगी हम इंडिया में ही उसको होस्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं बनारसी शहनाई एंड अदर 20 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, इनको जीआई टैग मिला है। मतलब यूपी से अगर हम देखें अब टोटल ऑफ 21 प्रोडक्ट्स को नया जीआई टैग मिला है। एंड इससे हुआ क्या है, यूपी अब वो स्टेट बन गई है जिसमें सबसे ज़्यादा हमें जीआई टैग्स देखने को मिलते हैं। एंड अब सेकंड पोजीशन पे कौन सी है, तमिलनाडु। यूपी में अगर हम बात करें तो कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है, तो 77 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। एंड तमिलनाडु में 69। अगर हम बात करें बनारस से अलोन, बनारसी अगर हम देखें तो अलोन 32 प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जीआई टैग मिलता है। करेक्ट। अगर हम यहाँ पे देखें कुछ प्रोडक्ट जैसे बनारसी शहनाई, यहीं पे हम देखें बनारसी शहनाई हो गई, बनारसी तबला हो गया, बनारसी बरवान मिल्च हो गया, राइट। तो ये सभी प्रोडक्ट को यहाँ पे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इनॉग्रेट किया अमरावती एयरपोर्ट को। एंड इन्होंने अनाउंस किया साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये एशिया का लार्जेस्ट पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर बनाया जाएगा, क्या लोकेशन रहेगी, तो ये आपका महाराष्ट्र में ही रहेगा। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ इट। ये 2 चीज़ याद रखेंगे, एक तो अमरावती एयरपोर्ट, इसी के साथ साथ इन्होंने चीफ मिनिस्टर ने पहली फ्लाइट अमरावती से मुंबई के लिए भी फ्लैग ऑफ की, जो कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान स्कीम के अंडर यहाँ पे लॉन्च की गई थी, राइट। एंड यहीं पे हमने देखा कि इस पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी लॉन्च किया गया, जहां पर हम देखेंगे ये साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहेगा, जहां पर हर साल अगर हम देखें 180 पायलट्स को ट्रेन किया जाएगा। एंड 34 ट्रेनिंग पायलट एयरक्राफ्ट भी यहाँ पे सेटअप किए गए हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, सीपी राधाकृष्णन। यहाँ पे नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क। नेक्स्ट आ जाते हैं सीईए, इन्होंने लॉन्च किया स्टेलर मॉडल को फॉर रिसोर्स एडिक्वेसी प्लानिंग। देखो स्टेलर क्या है, स्टेट ऑफ आर्ट टोटली इंडिजीनियसली डेवलप्ड रिसोर्स एडिक्वेसी मॉडल। ये एक सॉफ्टवेयर टूल है जो कि डिजाइन किया गया है टू ऑप्टिमाइज द इंडियाज पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज प्लानिंग। इसको लॉन्च किया गया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा। इस सॉफ्टवेयर से होगा क्या, सबसे पहली चीज ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर दिया जाएगा सभी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी
कंपनीज को, ताकि जो रिसोर्स है उसको हम प्रॉपर तरीके से प्लान कर सकें। इससे होगा क्या, ये हेल्प करेगा ताकि हमारी नो पावर कट्स हो सकें, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कट ना देखने को मिले। कैसे हम चीपेस्ट वेज फाइंड कर सकें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का, उसको मैनेज करने का, एंड कैसे हम बेस्ट वेज को फाइंड कर सकें कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी या रिन्यूएबल एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं कैसे हम उसको स्टोर कर सकें। एंड इस सबसे मदद क्या होगा, हमारा जो एम क्या है कि इंडिया में लोगों को 24/7 इलेक्ट्रिसिटी का सपोर्ट मिल सके, पावर कट्स ना हो। अगर हम इस टेलर मॉडल की बात करें, इसको बनाया किसके द्वारा गया है, सीईए के द्वारा, टीएलजी ग्रुप के द्वारा, जो कि टीएलजी ग्रुप आपका ये हांगकांग चाइना बेस्ड है, एंड फिलीपींस मनीला बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन तीनों के कंट्रीब्यूशन के साथ मिलकर यहां पे इसको लॉन्च किया गया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। इंडिया एंड 62 अदर कंट्रीज ने अग्री किया वर्ल्ड के पहले ग्लोबल कार्बन टैक्स इन शिपिंग इंडस्ट्री। देखो, शिपिंग इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है पॉल्यूशन में, राइट। ये डीजल पे शिप्स वर्क करते हैं एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना जरूरी है, ट्रेड होना जरूरी है, तो काफी पॉल्यूशन क्रिएट किया जाता है, राइट। ग्रीन हाउस गैस काफी रिलीज होती है यहाँ से। तो सिमिलरली एक ग्लोबल कार्बन टैक्स यहाँ पे इंपोज किया गया, क्योंकि ये जो था ना, शिपिंग इंडस्ट्री 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के अंडर नहीं था, पॉल्यूशन के अंडर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर, तो अब इसको लाया गया है एंड ये जो टैक्स है 2028 से लागू हो जाएगा। इस टैक्स के अंदर क्या है कि अगर आप सर्टेन लिमिट से ज्यादा अगर आपका इंडस्ट्री, आपका कंपनी पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, तो आपके ऊपर सर्टेन टैक्स इंपोज किया जाएगा। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि 2030 तक हम हर साल $10 बिलियन का यहाँ पे टैक्स से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। इस रेवेन्यू को फिर यूटिलाइज किया जाएगा कि कैसे हम शिपिंग इंडस्ट्री में पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, इसको ग्रीन फ्यूल की तरफ ले जा सकते हैं एंड नेट जीरो एमिशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट, ये मार्क करके चलेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं। न्यूयॉर्क ने अभी क्लेम किया 2014, न्यूयॉर्क ने डिक्लेयर किया 14 अप्रैल को एज अ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इंडिया के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134th बर्थ एनिवर्सरी के दौरान ये डिक्लेयर किया गया है, राइट। एंड भीमराव अंबेडकर जी का जो कंट्रीब्यूशन है, राइट, उनको ध्यान में रखते हुए इनको यहाँ पे न्यूयॉर्क ने डिक्लेयर किया 14 अप्रैल को एज द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एचडीएफसी बैंक। ये दो वो बैंक हैं इंडिया से जो कि वर्ल्ड के टॉप 100 बैंक्स में लिस्ट किए गए इन एसएनपी ग्लोबल की जो लिस्ट रहेगी, राइट। ये जो लिस्ट है ये भी रिलीज की गई। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं टॉप के बैंक कौन से हैं, टॉप के चारों बैंक चाइना के आ जाते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखेंगे, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, कंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड। ये पहली 4 पोजीशन पे तो इन्हीं के बैंक है चाइना के। फिर 5th पोजीशन पे आ जाता है जेपी मॉर्गन एंड चेस, ये यूएसए का है। 43rd पोजीशन पे एसबीआई, 73rd पोजीशन पे एचडीएफसी बैंक। अगर हम एसएनपी ग्लोबल लिस्ट की बात करें तो प्रेसिडेंट एंड सीईओ रहेंगे मार्टिन श्वेंग, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए। 1917 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं आरबीआई एंड एफआईयू। एफआईयू होते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, राइट। तो आरबीआई एंड एफआईयू इंडिया ने साइन किया एमओयू ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग है हम उनके लॉस को स्ट्रेंथन कर सकें, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट कर सकें, एंड कैसे हम नई नई वेज यहाँ पे ला सकते हैं, नए नए फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं, नए एक्ट्स ला सकते हैं जिससे हमारा जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोक सके। इसीलिए एएमएल सीएफटी फ्रेमवर्क को यहाँ पे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क को यहाँ पे लॉन्च किया गया, करेक्ट, स्ट्रेंथन करने की बात की गई। फिर दूसरी चीज यहां पे याद रखेंगे, आरबीआई ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस ऑफ कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ये अहमदाबाद गुजरात कोऑपरेटिव बैंक है, बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट कैपिटल एडिक्वेसी, पुअर अर्निंग्स एंड नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन सेक्शंस। फिर इसके बाद आ जाता है आरबीआई ने इंपोज की पेनल्टी ऑफ 61.4 लाख रुपीज ऑन कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, 38.6 लाख की पेनल्टी ऑन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड 29.6 लाख की पेनल्टी ऑफ पंजाब नेशनल बैंक बिकॉज ऑफ सम नॉन कंप्लायंस। फिर थर्ड चीज याद रखेंगे, यूके बेस्ड रिवॉल्ट, ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल एप्लीकेशन है। इनको फुल ऑथराइजेशन मिल गई है आरबीआई से टू ऑपरेट एज अ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। अब ये एनेबल कर सकते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शंस इन इंडिया, मतलब इनके थ्रू अब यूपीआई पेमेंट हो सकती है, करेक्ट। तो ये 3-4 चीजें यहाँ पे याद रखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं एसबीआई कार्ड ने पार्टनर किया टाटा डिजिटल के साथ टू लॉन्च टाटा न्यू एसबीआई कार्ड। ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, टाटा न्यू इन्फिनिटी एसबीआई कार्ड एंड टाटा न्यू प्लस एसबीआई कार्ड। एंड ये रुपए एज वेल एज वीजा दोनों पे ये वर्क करेगा।
नेक्स्ट UIICL ने पार्टनर किया सिडबी के साथ। UIICL ये चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है एंड इन्होंने सिडबी जो कि है लखनऊ यूपी बेस्ड इनके साथ पार्टनर किया ताकि MSMEs को यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड कराई जा सके। MSME सेक्टर में जो इंश्योरेंस है उसका पेनिट्रेशन हमें लाने के लिए, इससे क्या होगा, एक इंडिया की सिक्योरिटी हो जाएगी MSME सेक्टर में। इससे क्या होगा कि मान लो कल को कोई भी दिक्कत आती है उस बिजनेस में तो उनके पास इंश्योरेंस है टू क्लेम दैट इंश्योरेंस एंड अपनी बिजनेस को वो कैरी आउट कर सके। करेक्ट, सो टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट आ जाते हैं, SBI ने रीइंट्रोड्यूस किया अमृत वृशिष्टि स्कीम को। ये एक FD स्कीम है, 444 दिन की ये स्कीम है। कैच क्या है यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस करने का, 0.2% से यहाँ पे जो FD के रेट्स हैं वो कम कर दिया, मतलब 20 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिली है। सीनियर सिटीजन्स की देखें तो पहले 7.75% था जो कम करके 7.55% कर दिया गया है। जनरल पब्लिक के लिए पहले 7.25% था जो कि कम करके 7.05% कर दिया गया है। चलिए फिर आते हैं स्टूडेंट्स अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे। टाइम मैगजीन ने अभी रिलीज की 2025 की टाइम्स 100 लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। इसमें कोई भी इंडियन फीचर नहीं कर रहे हैं, राइट। ये लिस्ट बेसिकली क्या है कि पिछले एक साल में जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पीपल रहे, यहाँ पर आपके आइकन्स भी आ जाते हैं, पॉलिटिक्स भी आ जाते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, साइंस इंडस्ट्री से, बिजनेस से, राइट, हर फील्ड से यहाँ पे देखने को मिलते हैं। करेक्ट, एंड 6 डिफरेंट कैटेगरीज में जैसे मैंने बताया, लीडर्स, आइकन्स, आर्टिस्ट, इनोवेटर्स, पायनियर्स एंड टाइटन्स। करेक्ट। फिर यहाँ पे हम देखें, अगर मैं बात करूँ यंगेस्ट इंडिविजुअल, ये क्वेश्चन बन सकता है, हु इज द यंगेस्ट इंडिविजुअल जो इस लिस्ट पे आए हैं, वो 22 साल के हैं, वो एक ओलंपिक स्विमर हैं, वो है लियोन मार्चेंट। ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं एंड ये यंगेस्ट पर्सन है ऑन दिस लिस्ट इन द आइकन्स कैटेगरी। टाइम मैगजीन की बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगी, जेसिका सिबले, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA। फिर इसमें अगर हम देखें तो रमेश केवल रामानी, ये CEO हैं बॉस्टन USA बेस्ड वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के, इंडिया है, इंडियन ओरिजिन के हैं बट ये USA बेस्ड हैं। इसी के अलावा देखें डेमी मोरे, सेरेना विलियम्स, स्नूप डॉग, एड शरीन, ये आपके कुछ आर्टिस्ट आ जाते हैं। देन इसके अलावा देखें तो हॉलीवुड एक्ट्रेस स्कारलेट जॉनसन, अमेरिकन एक्ट्रेस एंड सिंगर क्रिस्टन एनी बेल, राइट, निकी ग्लासर, ये आपकी वीमेन आ गई, सेरेना विलियम्स हो गई, रशीदा जॉन्स हो गई, राइट, ये सभी वीमेंस भी इस लिस्ट में शामिल है। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की यंग ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट है। ये बेसिकली लिस्ट बताती है जो यंग ग्लोबल लीडर्स हैं अंडर द एज ऑफ 40 ईयर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू जी, ये भी इस लिस्ट में आए, एज वेल एज ओयो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड फाउंडर रितेश अग्रवाल भी इस लिस्ट में रहेंगे, राइट। 7 इंडियंस इस लिस्ट में आ जाते हैं, रितेश अग्रवाल, राम मोहन नायडू जी, निपुण मल्होत्रा, आलोक अनिल, नटराजन शंकर, मानसी सुब्रमण्यम, मनासी सुब्रमण्यम एंड अनुराग मालो, राइट। ये कुछ 7-8 इंडिविजुअल्स हैं जो आपको लिस्ट में पता होने चाहिए, मार्क करके चलिएगा इनको। ये लिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की गई। हेडक्वार्टर कहां पर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, कॉलेंजी स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आ जाते हैं, ACC ने फिर कुछ अपॉइंटमेंट अप्रूव करी जो कि हैं मांगी लाल जाटकी एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के ये नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं, 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं एंड ये किनको सक्सीड करेंगे, डॉक्टर हिमांशु पाठक को ये सक्सीड करेंगे। ICAR का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पे। अभी CCI ने अप्रूव किया कि पतंजलि आयुर्वेदा एंड इनकी 4 या 5 एंटिटीज हैं जो कि एक्वायर करेंगी MGIL को फॉर 4,500 करोड़ रुपीज। 98.055% स्टेक एक्वायर किया जाएगा महकमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड में एंड 4500 करोड़ रुपए की लागत से ये एक्वायर करेंगे इनको। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर साइंस एंड टेक पर। इंडिया एंड स्लोवाकिया के द्वारा एक MOU साइन हुआ इंडिजीनियस कॉम्पैक्ट व्हीकल डेवलपमेंट के ऊपर कि मल्टीपल टेरेंस में, डिफरेंट वेदर में, राइट, डिफरेंट सिचुएशंस में ये एक हार्डी हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्हीकल हो एंड कॉम्पैक्ट व्हीकल हो। इसको बनाने के लिए, इंडिजीनियसली बनाने के लिए, इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए कि इसको इंडिया में ही बनाया जा सके, राइट। इससे इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी एंड इससे सेल्फ रिलायंस एंड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी हमारा जोर आएगा, राइट, हम स्ट्रांग होंगे। तो इसीलिए इंडिया एंड स्लोवाकिया के द्वारा यहाँ पे MOU साइन हुआ। इसके बाद आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया के विल पुकोस्वी, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं।
फिर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, 18 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है कल्चरल इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड हिस्टोरिकल प्रिजर्वेंस, राइट, ये हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं तो इनको प्रिजर्व करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, इनकी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। इसकी एक थीम भी रहेगी, वो है हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट्स, प्रिपेयरनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर्स ऑफ ICOMOS एक्शंस। ICOMOS क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर जस्टिस अरुण पल्ली, इनको अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। ये 38वें चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं, ये सक्सीड करेंगे जस्टिस ताशी राजस्थान को। तो टेक अ नोट ऑफ दिस स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्न में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अगर यहाँ पे हम देखें ऑप्शन ए एंड बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है कि जो कोशी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट है ये उड़ीसा का है, तो नहीं, ये उड़ीसा का नहीं है, ये बिहार का है। अब आपका ऑप्शन सी भी सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिगार्डिंग द रिसेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको बतानी है कौन कौन सी आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखें, ए और बी ए हमारी दोनों गलत स्टेटमेंट है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगर ए देखें तो ये जो माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर इनॉग्रेट किया गया, ये छत्तीसगढ़ में नहीं किया गया, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ये किया गया है नागपुर महाराष्ट्र में। वहीं पे पीएम मोदी ने ले किया फाउंडेशन स्टोन ऑफ लॉन्च किया मेमू क्या है? ये आपका मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन सर्विस, राइट। ये कहाँ पर रहेगा? ये महाराष्ट्र में नहीं, ये छत्तीसगढ़ में, राइट। तो अब आपके तीन ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उस ऑपरेशन का नाम बताओ जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया था, राइट, उसके टाइम पे लोगों की वहाँ पे हेल्प की जा सके, गवर्नमेंट तक सप्लाईज पहुँचाया जा सके ताकि सिटीजन तक जो बेसिक सर्विसेज हैं उनका वो लाभ ले सके। तो ऑपरेशन का नाम क्या था यहाँ पे? तो ये है ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट पे आते हैं, एज पर द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन डाटा रिलीज्ड बाय RBI इन मार्च, व्हाट वाज द नेट क्लेम्स ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर ऑफ FY25? तो वो है $364.5 बिलियन। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन मार्च हु वाज अवॉर्डेड द 2025 एबेल प्राइज बाय द नॉर्वेनियन अकेडमी ऑफ साइंस, राइट। किस लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ डी मॉड्यूल्स एंड द डिस्कवरी ऑफ क्रिस्टल बेसिस। ये एबेल प्राइज को हम बोलते हैं नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता तो एबेल प्राइज दिया जाता है, जिसको रिगार्ड दिया जाता है एज द नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। तो किनको सम्मानित किया गया है एबेल प्राइज से? वो है मसाकी काशिवारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द इंडियन बिजनेसमैन who was appointed to the IMF Advisory Council on Entrepreneurship and Growth in March 2025। तो वो है नटराजन चंद्रशेखरन, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन मार्च RBI ने अप्रूव किया फेडरल बैंक को टू एक्वायर 4% स्टेक ऑफ एगास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू इंक्रीज द टोटल स्टेक टू व्हाट? तो अब उनका टोटल स्टेक बढ़ के कितना हो गया? 30%। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक्सरसाइज टाइगर ट्राइम जो कि 4th एडिशन है ऑफ द बायलेटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। ये इंडिया और USA के बीच में हुई थी। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड इंडिया से यहाँ पे किस INS ने पार्टिसिपेट किया? INS जलश्वा का यहाँ पे हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। इंपॉर्टेंट रहेगा, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन मार्च मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन्होंने इशू किया एक नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द रिवाइज्ड वेजेस अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जो कि है मनरेगा एक्ट। तो ये जो मनरेगा के अंडर जो वेजेस थी ना वो बढ़ गई हैं। पहले कितनी हुआ करती थी? वो थी एवरेज 349 रुपीज़, जो बढ़ के 370 रुपीज़ पर पर्सन पर डे हो गई है। अब ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द स्टेट वेयर द क्लीन एनर्जी प्लेयर वारी एनर्जीज लिमिटेड इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का लार्जेस्ट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विद 5.4 गीगावाट कैपेसिटी इन मार्च। तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये गुजरात में लॉन्च किया गया। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लांट इन इंडिया, जिसको इनॉग्रेट किया गया गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा इन मार्च इन गुजरात, राइट, ऑन द फाउंडेशन डे ऑफ गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो वो रहेगा क्लोरोट्यूलिन प्लांट। टेक अ नोट ऑफ दिस, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द थीम फॉर द 2025 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन 21 जून अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो जो भी 2025 में योगा डे होगा 21 जून को, ये 2015 से हम ये डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। पूछा जा रहा है जो 2025 में योगा डे होगा उसकी थीम क्या रहेगी? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ।
नेक्स्ट आ जाते हैं, हु बिकेम द 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ऑन 1st of April एंड ऑल्सो द फर्स्ट अफ्रीकन वीमेन एंड सेकेंड वीमेन इन ओवरऑल टू होल्ड द पोजिशन रिप्लेसिंग पैट्रिशिया जेनेट ऑफ स्कॉटलैंड। तो कौन बनी है 7th सेक्रेटरी जनरल? वो हैं शर्ली बॉचवी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द टेलीकॉम कंपनी इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया प्रपोजल इन मार्च टू रेज देयर स्टेक्स टू 48.99%। कैसे? इनकी 36,950 करोड़ रुपीज़ का लोन था, उस डेट को अब इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया सरकार के द्वारा, राइट। तो यह है वोडाफोन इंडिया। नेक्स्ट, नेम द मिशन लॉन्च्ड बाय SpaceX on 1st of April, marking the first human spaceflight over the Earth's polar region using Falcon 9 rocket and Crew Dragon capsule Resilience। तो क्या नाम रहेगा उस मिशन का? फ्रेम 2 मिशन नाम रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया जिन्होंने MOU साइन किया PSB अलायंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ फॉर डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस। तो क्या नाम रहेगा उस पब्लिक सेक्टर बैंक का? वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया टू मॉनिटर द रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन एंड एंटी स्नेक वेनम अक्रॉस इंडिया। तो क्या नाम रहेगा उसका? वो है जूविन, ताकि अगर मान लो एक सेंटर पे कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है एंड अर्जेंट डिमांड है तो एक प्रॉपर डाटाबेस रह सके कि कहाँ पर वैक्सीन मिल सकती है, किस सेंटर पे मिल सकती है, एंड वहाँ पे फिर उससे कॉन्टैक्ट किया जा सके। Next, what was the denomination of the special postage stamp unveiled by the President of India Draupadi Murmu ma'am on 1st of April to commemorate the 90th anniversary of RBI at the National Center for Performing Arts in Mumbai। तो 0.5 रुपीज़ का ये डिनोमिनेशन का ये कॉइन लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द कंपनी दैट पार्टनर विद फेडरल बैंक लिमिटेड एंड NPCI टू लॉन्च फेड स्टार बेस्ड क्रेडिट कार्ड फॉर बिजनेस कस्टमर्स ऑन 1st of April। तो वीज़ा ने यहाँ पे पार्टनर किया फेडरल बैंक के साथ एंड NPCI के साथ ताकि ये फेड स्टार बेस्ड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FIEO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑन 1st of April सक्सीडिंग अश्विनी कुमार। तो किन्होंने यहाँ पे सक्सीड किया, किनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ FIEO? वो है सुभाष चंद्र रहलान जी। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपॉइंट किया शिवा सुब्रमण्यम रमन को एज देयर चेयरमैन सक्सीडिंग दीपक मोहाटी। तो वो है वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? वो है PFRDA। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल ECC इन्होंने अपॉइंट किया पूनम गुप्ता को एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI फॉर द टेन्योर 3 ईयर्स के लिए, 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सरहुल फेस्टिवल इन्होंने सेलिब्रेट किया गया ऑन ट्यूसडे टू वेलकम द स्प्रिंग एंड मार्क द न्यू ईयर फॉर आदिवासी कम्युनिटीज़। ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? एज वेल एज ये एक पब्लिक हॉलीडे मानी जाती है, तो ये झारखंड में ऑब्जर्व किया जाता है सरहुल फेस्टिवल। नेक्स्ट आ जाते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन्होंने अनाउंस किया रिकॉर्ड ब्रेकिंग एडिशन ऑफ कितनी अमाउंट ऑफ गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन इन FY25। तो 25 गीगावाट का यहाँ पे एडिशन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल सेबी इन्होंने एक्सटेंड कर दी द डेडलाइन फॉर इंप्लीमेंटिंग देयर रिटेल एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग रेगुलेशंस फ्रॉम 1st of April टू विच डे। तो किस डेट तक? वो है आपकी एक्सटेंड कर दी गई 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक, राइट। ये रिटेलर्स के लिए एल्गो ट्रेडिंग अप्रूव की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑन अप्रैल SBI एंड सिटी बैंक इन्होंने अनाउंस किया $295 मिलियन का सोशल लोन फैसिलिटी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू डैश इन इंडिया। फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए फैसिलिटी यहाँ पे लॉन्च की गई। So let's start with our homework section, students. First question, tell me recently which state hosted the men's hockey hero Asia Cup? Second question, recently which sport was added to the LA Olympics recently? Third question, World Autism Awareness Day, when do we observe this, and give me the theme also of this day. Fourth question, tell me recently Tiger Trump. I asked this question yesterday also, but multiple students were not able to answer, right? Tiger Trump, this is an exercise held between which countries? And the important question is that from India, who took part in this exercise? Which regiment or which Indian Naval Force or which aircraft, depending upon the forces that took part, right? Tell me that also. And which edition of this exercise was there? So this is a repeated question. Fifth question, fifth is your tell me recently, when do we observe National Maritime Day? Right? Tell me the day, the theme, and which edition of this day was observed. Right? Then sixth question, who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of SBI Card? So these are your homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.